Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all know that I was explaining you about equivalent fractions and how to obtain equivalent fractions with different numerators and denominators. And there are two ways to obtain equivalent fractions. Either you can multiply the numerator and the denominator of the fraction with the same number, or the other method which you can use is you can divide the numerator or the denominator with the HCF of them. ठीक है, आप किसी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, HCF से नहीं. You should divide it with the same number. And yes, I have also explained you about how to compare the equivalent fractions. And how do we compare the equivalent fractions? We do the cross multiplication. If the after doing the cross multiplication, LHS is equals to RHS, then both the fractions are equivalent fractions. If they are not equal, then the fraction is not equivalent. And I have also explained you how to obtain the simplest form of a fraction. And what is the simplest form? If you know the answer, you can reply to me in the comment section. A fraction is said to be in the simplest form when the HCF of the numerator and denominator is 1. यानी कि आप उसे further reduce ही नहीं कर सकते. You cannot reduce it further. So this was a quick recap of yesterday's video, right? So on that base only, I am going to explain you the exercise 5C. That is the next exercise of this chapter. Correct? This is the third exercise. And the students who are missing the videos, जो आज की वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, they are not going to understand. So my request from all of you is watch the videos regularly. आप रोज वीडियो देखेंगे तभी आप कनेक्ट करके समझ पाएंगे. बिकॉज द प्रीवियस वीडियो द वीडियो विच आई एम पोस्टिंग टुडे विल बी रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो. तो आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5C. क्वेश्चन नंबर 1. राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. करेक्ट? So I have already explained you how to write the 5 fractions, equivalent fractions. So there are total how many options? 8 options. तो मैं पहले 4 आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ as homework. Now I am explaining you from 5th option. Okay. So 5th option is 3/7. अब आप 3/7 को equivalent fractions आपको next 5 equivalent fractions लिखने हैं. And how do we obtain equivalent fractions? अगर आपको पता है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको बार बार बोलने के लिए इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि कोई चीज़ें अगर आप लिखते हो तो वो आपको कभी भूलती नहीं है. यू डू नॉट फॉरगेट द थिंग्स विच यू आर राइटिंग ऑन डेली बेसिस. सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. करेक्ट? Now to obtain the next equivalent fraction, I have to multiply the numerator and the denominator by the same number, that is 3. So it will be 9/21. Again taking the same fraction and multiplying the numerator and denominator by the same number. Correct? So it is 12/28. Now we have obtained 3 fractions. 2 more. Now it is 15/35. Now the next one, now we have to multiply by 6. So it will be 18/42. So this is how you're going to write the next equivalent fractions. And in this question, 5 fractions आपसे पूछे गए थे, 5 fractions. So this is the first fraction equivalent and this is the second fraction equivalent. This is third fraction, fourth fraction and then fifth fractions. Correct? Now let me explain you the next option, that is option number 6. So students, 6th option is 6/11. ओके, 6/11 आपका 6th ऑप्शन है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन दी नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस.
आपको अगले 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. नाउ टू ऑब्टेन द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. नाउ अगेन टू ऑब्टेन द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद विच नंबर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई? You are going to multiply it by 4. Now to obtain the next equivalent fraction, with which number you are going to multiply? You are going to multiply it with 5. Correct? Now to obtain the next equivalent fraction, with which number you are going to multiply? 6. So I hope now 5 fractions are completed. 1, 2, 3, 4, 5. Right, so the first one is 12 upon 22, then 18 upon 33, 24 upon 44, 30 upon 55, and last one is 36 upon 66. I hope you must have understood, students. Now coming to the 7th option. So the 7th option is 7 upon 9. 7th option भी और न्यूमरेटर भी 7 है इसका आपका. What a coincidence. So 7 upon 9. So to obtain the first equivalent fraction आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? You will multiply it with 2. Now to obtain the next one, multiply the numerator and the denominator by 3. Now to obtain the next one, multiply the numerator and the denominator by 4. Now to obtain the next one, multiply the numerator and denominator by 5. Clear students? So 1, 2, 3, 4. अभी एक और आपका बचा है. So to obtain the last one, we have to multiply the numerator and denominator by 6. So it is 42 upon 54. Now the next 5 equivalent fractions of 7 upon 9 are 14 upon 18, 21 upon 27, 28 upon 36, 35 upon 45, and last one is 42 upon 54. Clear students? Now coming to the last option of this question, that is 8th option. So students, 8th option is 5 upon 12, correct? So now you have to tell me what is the first equivalent fraction of 5 upon 12. Please pause the video and reply to me in the comment section. 5 upon 12 का next equivalent fractions क्या होगा? It will be 10 upon 24. Now again 5 upon 12 का next equivalent fraction क्या होगा? It will be 15 upon 36. Again 5 upon 12, the next equivalent fraction will be 20 upon 48. Now again 5 upon 12, the next equivalent fraction will be 25 upon 60. Again 5 upon 12, the next equivalent fraction will be 30 upon 72. Right students? So now we have found 5 equivalent fractions. First one is 10 upon 24. Second one is 15 upon 36. Third one is 20 upon 48. Fourth one is 25 upon 60. And last one is 30 upon 72. Correct students? So I hope you must have understood. अब बाकी के पहले के जो first 4 options है, on this basis you have to do the first 4 options of this question. Now coming to the next question, that is question number 2. तो question number 2 में आपसे पूछा गया है which of the following are the pairs of equivalent fractions. So you have to check. इसमें आपको 6 options दिए हैं, आपको check करना है कि वो जो 6 options हैं इनमें से कौन कौन से pairs equivalent fraction हैं. So we have to find out whether they are equivalent or not. So one by one we will check all the pairs and I will tell you how to check. So the first option is
5/6 and 20/24. So we have to check that both the fractions are equivalent fractions or not. अब मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए क्या करेंगे. अब आपका 5 जो है किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4s are 20. नाउ 6 के टेबल में 20 कब आता है? सॉरी 24 कब आता है? 4 times 6 4s are 24. That means the numerator and the denominator are multiplied by the same number, which says that these fractions are equivalent fractions. ये दोनों fractions equivalent fractions हैं. This was first method जिससे आप पता कर सकते हैं. Now the second method by which you can find out that this fraction, both the fractions are equivalent or not. तो दूसरा मेथड जो होगा आपका, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इसे रिड्यूस करके देखें. तो 5 4s are, sorry not 5 4s are, 4 5s are 20 and 4 6s are 24. After reducing you will get the same values. That means both the fractions are equivalent fractions. अगर आपको ये मेथड भी कन्वीनियंट नहीं लगा तो आई एम गिविंग यू वन मोर मेथड, माई लास्ट मेथड. ओके, so the third method will be 5/6 and 20/24. Now you have to check कि ये दोनों fractions equivalent हैं या नहीं. For that what you are going to do? Take the HCF of the numerator and the denominator. तो आप 20 और 24 का HCF ले लीजिए. क्या है आपका HCF? The HCF of 20 and 24 is 4. तो आप उसको HCF से डिवाइड कर दीजिए, so that you can get this fraction into its simplest form. So 5/6 is equals to 5/6. We have got this fraction 20/24 into its simplest form, and after finding out it into its simplest form, दोनों के दोनों आपके क्या हैं? Equal हैं, which says that both the fractions are equivalent fractions. Okay students, तो ये मेरे 3 methods थे. आपको तीनों में से जो convenient लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. Now why I have given you all the 3 methods? यहाँ पे आपके नंबर्स छोटे छोटे थे तो आपने रिड्यूस कर लिया. समटाइम्स व्हाट कैन हैपन इज यहाँ पे 120 आ जाएगा, यहाँ 324 आ जाएगा, तो आपको रिड्यूस करने में हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी हो. सो इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस HCF मेथड. इफ़ यू विल यूज़ दिस मेथड HCF1, इसमें आप HCF लेके देन यू कैन चेक कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. करेक्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट ऑप्शन. So the next option is 3/8 and 15/40. 3/8 and 15/40. Now first method, 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5s are 15 and 8 के टेबल में 40 कब आता है? 8 5s are 40, which says that the numerator and the denominator are multiplied by the same number. सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो वी हैव ऑब्टेन्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ बाय द सेकेंड मेथड आप रिड्यूस करेंगे इसको. अगर आप इसे रिड्यूस करते हैं तो 3 5s are 15. ओके, 3 5s are 15 एंड ये तो आपका 3 से रिड्यूस नहीं होगा, राइट. 5 3s are 15, 5 8s are 40. सो इट इज़ 3/8. LHS इज इक्वल्स टू RHS. जो तीसरा मेथड था उसमें आप क्या करेंगे? 15 और 40 का HCF निकालेंगे. तो 15 और 40 का HCF आएगा 5. आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. क्या आएगा आपका? 3/8. करेक्ट स्टूडेंट्स. सो आई हैव एक्सप्लेन यू द सेकेंड ऑप्शन बाय ऑल द 3 मेथड्स. तीनों में से कोई एक ही आपको अपनी कॉपी में करना है जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे. सो यू हैव टू डू ओनली वन मेथड in your copy which you find the most convenient and suitable method. Okay, so third option, 4/7 and 16/21. 4/7 16/21. Now what we have to do? 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4s are 16. अब 7 के टेबल में 21 कब आता है? 7 3s are 21. Which says that the denominator and the numerator both are multiplied by the different numbers. दोनों को अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है. Which says that
this pair is not a pair of equivalent fractions. No, they are not equivalent fractions. Okay, they are not equivalent fractions. ये आपके पहले मेथड से ही पता चल गया. बाकी के दो मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं. 1621 का आप HCF लेंगे तो उसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा. Why the HCF of 16 and 21 is 1? Because they are a pair of co-prime numbers. मैं बार बार क्यों याद दिलाती रहती हूँ आपको ये सारी चीज़ें? बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर, आप भूल जाओगे तो आप आगे जो है ये आपकी हर क्लास में काम आएंगी. 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास. सो यू शुड रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये को प्राइम का पेयर है तो इनका HCF 1 के अलावा कुछ नहीं होगा. सो दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. सो दैट इज वाई दिस पेयर इज नॉट अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Okay students, now I have explained you the third option. Now coming to the fourth option. जो भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ वीडियो में, you have to do these questions in maths class work copy. Okay? So the fourth option is 2/9 and 14/63. Correct? Now 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7s are. 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 7s are. पहले मेथड से ही इट इज प्रूव्ड दैट दिस इज अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ कमिंग टू द सेकंड मेथड, आप रिड्यूस करिए 14/63 को. 7 2 14, 7 9 63. सो इट इज रिड्यूस्ड. आपका दूसरा मेथड, टेक द HCF. HCF आपका क्या आएगा? 7 ही आएगा. सो इट विल बी 2/9. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. So that is why this is a pair of equivalent fraction. So I hope you must have understood till this option. Option number 5, option number 6 आपका homework होगा. Correct students? Okay, now coming to the next one, next question. So the next question of this video is question number 3. So what is question number 3? Find an equivalent fraction of 3/5 having. अब आपको क्या करना है? 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें आपको? द फर्स्ट ऑप्शन इज डिनोमिनेटर 30, यानी कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? 30 हो. नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी 5 के टेबल में आपका 30 कब आता है? 5 6 are 30, and since both the fractions are equivalent, that means that you have to multiply the numerator and the denominator by the same number. आपको same number से multiply करना है. तो जब आपने 5 को 6 से multiply किया तो 3 को भी आपको 6 से ही multiply करना है. So the numerator will be 18. Okay students? So it will be 18/30. Now the second option में भी आपको 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद न्यूमरेटर 24. 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 24. यू डोंट नो व्हाट इज द डिनोमिनेटर. अब आपको ये नहीं पता कि डिनोमिनेटर क्या है. राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 are 24. Since both the fractions are equivalent fractions, so denominator has to be multiplied by the same number. So 5 8s are 40. Right students? So it is 24/40. So you must have understood this question also. Question number 3. अब आपका question number 4, ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क होगा. You have to do question number 4 in your maths homework copy. Now coming to the next question, that is question number 5. Correct? So let me explain you that. Question number 5 is write an equivalent fraction of 6/11. अब आपका इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दिया है with denominator 77. Correct? With denominator 77. अब आपके 11 के टेबल में 77 कब आता है? 11 7s are 77. Same goes with the numerator. 6 7s are 42. Correct? Now coming to the second option. Second option is numerator 60.
सो 6/11 न्यूमरेटर आपको बता दिया गया 60, यू डोंट नो व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर, तो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आए, सो इट इज 6 10s are 60, सेम गोज विद द डिनोमिनेटर 11 10s are 110. So I hope it is clear students. Now coming to the next question that is different. अभी तक हम लोग जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर रहे थे वो सारे मल्टीप्लिकेशन थे. नाउ कम्स द क्वेश्चन विच इज़ हैविंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वेयरइन यू हैव टू डिवाइड, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, राइट स्टूडेंट्स. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करती हूँ. ऑन दैट बेसिस ओनली आपको 7th क्वेश्चन खुद करना होगा, ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द 6th क्वेश्चन. So question number 6 is find an equivalent fraction of 24/30 having numerator 4. आपको 24/30 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन करना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 4 हो, डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है. नाउ द रिवर्स प्रोसेस विल बी अप्लाइड. अब 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 24. अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 6 30, क्योंकि जब आप 5 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 30 आता है. अब कुछ ऐसे बड़े नंबर्स होंगे जहाँ पे ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज 24 को आप 4 से डिवाइड करिए, ठीक है. तो वी ऑल नो दैट 4 6 24. अब आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को 6 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 6 and you will obtain the answer. So it is 4/5. I hope you must have understood students question number 6 also. Now question number 7 is also your homework on that basis. So अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. Subscribe the channel and press the bell icon.